नमस्ते एवरीवन, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कैसे हाल चाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? परिवार कैसा है आपका? आपके माता पिता कैसे हैं? आपके बच्चे कैसे हैं? आज हम वही न्याय वैशेषिका फिलॉसफी कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत स्लो चल रहा है, आई नो, एंड आई एम अपोलोजेटिक टू दैट। तभी थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ कि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए एटलीस्ट न्याय वैशेषिका फिलॉसफी को, राइट। अब हमने 4 प्रमाणास कल पढ़ लिए थे, जिसमें हमने चारवाका, बुद्धिस्ट एंड अदर फिलॉसफीज के कंपैरिजन में देखा था, राइट। अब हम परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष को पढ़ेंगे। The Nayakas admitted only the 5 cognitive senses which they believe to be composed of one or other of the 5 elements. These 5 senses could each come in contact with the spatial characteristics of that element of which they are composed. Thus, air could perceive sound because sound was the attribute of Akash, of which the auditory senses, the ear, was made up. The eye could send forth rays to receive the color, etc. For etc. of things, thus the cognitive senses can only manifest their specific objects by going over to them and thereby coming in contact with them. The conative senses, vak, pani, pad, payu, and upastha, recognized in Sankhya are as separate senses as not recognized here as such, for the function of these so-called senses are discharged by the general motor functions of the body. Perception is defined as the right knowledge generated by the contact of senses by the objects, devoid of doubt, error, and not associated with any of the simultaneous sound cognitions, such as the name of the object as heard by from a person uttering it just at the time when the object is seen, or name association and determinate. Gangesha, a later Nayaka of great reputation, describes perception as immediate awareness, prataksha sakshatkaritvam lakshanam. इसमें इन्होंने 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं उससे जो भी टच में आता है हम उसे ही प्रत्यक्ष मान रहे हैं। जैसे अगर हम किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं तो हम देख भी तो रहे हैं। जैसे हम ऑडियो विजुअल आजकल हम देखते हैं कि एक तो हो गई, वन इज ओनली ऑडियो, अनदर इज ऑडियो विजुअल एज वेल, वेयर यू आर सीइंग द पर्सन स्पीकिंग। आप इसे इन द सेंस ये भी देख सकते हैं कि जैसे सपोज अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, एंड जब हम इंटरव्यू लेते हैं उसके बाद यू रियलाइज के यू हैव टू मेक श्योर दैट द पर्सन हु इज स्पीकिंग शुड बी द सेम, राइट। तो उस केस में व्हाट विल यू डू? यू माइट एंड अप सेइंग ओके, आई वांट टू सी दैट पर्सन आल्सो हु इज स्पीकिंग ऑन द अदर साइड, राइट। If we see a cow, a man says, "Here is a cow." The knowledge of the sound is associated with the percept cannot be counted as perception but as sound knowledge, शब्द प्रमाण। जब किसी ने बोला कि ये काव है, तो उस ये जो नॉलेज है जिस प्रमाण से वो आई है, दैट इज शब्द प्रमाण। के यू आर जस्ट टेलिंग कि ये काव है एंड आप अपना शब्द को प्रमाण में देते हो कि यस दिस इज अ काव, राइट। सॉरी इस डिस्टर्बेंस के लिए। राइट, सॉरी, बीच में कुछ काम में याद आ गया था। आई रियली वांटेड टू फिनिश दिस वर्क फर्स्ट, तो ओके। The right knowledge, which is generated directly by the contact of the senses with object, is said to be product of the perceptual process. Perception may be divided as indeterminate nirvikalpa and savikalpa determinate.
Indeterminate perception is that in which the thing is taken at the at the very first moment of the perception, in which it appears without any association with name. परसेप्शन हमने निर्विकल्प और सविकल्प पढ़ा था कि जब आप किसी चीज को जस्ट देखते हो फर्स्ट इंस्टेंस पे, आपको इसके बारे में पता नहीं, जैसे इन द सेंस कि अगर कोई बाहर देखता है तो ही विल से कि ठीक है, ही इज टॉकिंग टू समवन और ही इज मेकिंग अ वीडियो और समथिंग, बट व्हेन ही कम्स इनसाइड एंड ही सीज ओके ही इज मेकिंग अ वीडियो, इज मेकिंग अ लाइव वीडियो, ही इज मेकिंग अ ऑनलाइन वीडियो, इज मेकिंग अ लाइव, तो उस केस में इट इज सविकल्प, तो सारे हो जाते हैं, सारे परसेप्शंस आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें इनडिटर्मिनेट परसेप्शन इज दैट इन विच द थिंग इज टेकन एट अ वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ परसेप्शन इन विच इट अपीयर्स विदाउट एनी एसोसिएशन विद नेम। कई बार जैसे आप किसी की आवाज़ सुनते हैं तो आवाज़ सुनने के बाद आपको पता लगता है हाँ किसी इंसान की है, लेकिन पता नहीं किसकी है, फिर आप थोड़ा सा और गौर से सुनते हैं, देन यू गेट टू नो दैट हु इज स्पीकिंग। Determinate perceptions takes place after the indeterminate stage is just passed. It reveals things as being endowed with all characteristics and qualities and names, just as we find in all our concrete experience. Indeterminate perception reveals the things with their characteristics and universals. But at this stage, there being no association of name, it is more or less indistinct. इनडिटर्मिनेट में क्योंकि उसका एसोसिएशन नहीं है किसी भी नाम से, कुछ भी आप नाम बोलते हैं, किसी भी चीज को आप प्रोनाउंस करते हैं, उसका कोई देयर इज नो एसोसिएशन विद दैट, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट्स कॉल्ड इनडिटर्मिनेट, राइट। When once the names are connected with the percept, it forms the determinate perception of thing called सर्विकल्प प्रत्यक्षा। जब आप उसका नाम जानने लगते हैं, जब आप जैसे आगे क्या है, एक डिवाइस है, रेक्टेंगुलर है, ये जस्ट मेरे को फेस कर रहा है, इज अ स्क्रीन विच आई कैन सी माई सेल्फ, लेकिन उसके बाद जब मैं नाम पता करता हूँ ओके दिस इज अ फोन, दिस ये इतने देर तक लाइव चल रहा है, दैट इज अ सर्विकल्प प्रत्यक्षा। If at the time of having the perception of a thing of which the name is not known to me, anybody utters its name, then the hearing of that should be regarded as separate auditory name perception. लेकिन अगर आप जैसे देख रहे हैं और किसी और ने नाम बुलाया कि अच्छा ये फूल है, गुलाब का फूल है, तो ये इट्स ऑडिटरी नेम परसेप्शन, इसको सेपरेट ऑडिटरी नेम परसेप्शन बोला जाएगा, जिसे हम शब्द प्रमाणा बोल रहे थे। Only that product is said to constitute nirvikalpa perception, which results from perceiving process of contact of senses with the object. Of this nirvikalpa indeterminate perception, it is held by the later Nayikas that we are not conscious of it directly, but yet it has to be admitted as a necessary first stage without which the determinate consciousness could not arise. The indeterminate perception is regarded as the first stage of in the process of perception. At the second stage, it joins other conditions of perception in producing the determinate perception. The contact of senses with the object is regarded as being of six kinds: contact with the dravya, thing called samayoga; contact with the gunas, qualities, through the thing samyukta samavaya, in which they inhere in the samavaya inseparable relation; contact with the gunas such as color, etc., in the generic character as universals of those qualities, example colorness, rupatva, which inhere in the gunas of the samavaya relation. अब हम इन सब चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं? आपको एक डिजीज के बारे में पता होगा जिसमें एक इंसान भूलता रहता है, राइट, एंड ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम आ जाती है। Whenever as and when you grow old, जैसे इनिशियली कभी आपने कुछ किया तो आप भूल गए, जैसे कई छाता रख रख के भूल गए, कहीं अपनी दवाई रख के भूल गए, एंड फिर वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती रहती, राइट। एंड आप उसके हिसाब से कोई डिज़ाइन कैसे करोगे, इंटीरियर्स कैसे डिज़ाइन करोगे, ये उसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। हम परसीव कैसे करते हैं, अगर हमें ये पता लग जाए कि एक इंसान परसीव कैसे करता है, देखिए हम तो इन अ सेंस वी आर स्टिल रिमेम्बरिंग थिंग्स, राइट। ऐसा तो है नहीं कि पानी पीना भूल जा रहे हैं, हम खाना खाना भूल जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो
जब हम एक ऐसे कंटेक्स्ट की बात करते हैं जिसमें a person is facing with such problems that he is not having remember short term memory loss हो गया, कुछ हो गया, तो उस केस में in case you are designing the interiors for that, how will you actually design the interiors? पहले तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप कैसे एक चीज को एनालाइज कर रहे हो। जस्ट लिख देने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती। यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज इन अ वेरी डीप मैनर कि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कैसे है। पहले निर्विकल्प परसेप्शन होता है जिसमें नथिंग इज नोन, ओनली द बेसिक थिंग विच योर ब्रेन कैन रिकॉग्नाइज, कि कोई बोल रहा है, कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, राइट? अगर आप जैसे चल रहे हैं, someone is following you, you will get to know okay there are certain footsteps that are actually behind me, right? जब आप उस चीज को थोड़ा सा देखें तो आपको रिकॉग्नाइज करने में आसानी रहेगी। तो अ, आप उस प्रॉब्लम तक कहाँ तक पहुंचे हैं, किस लेवल पे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करने में ये थ्योरी आपको हेल्प करेगी कि टिल व्हाट लेवल द पर्सन एक्चुअली एनालाइजेस, टिल व्हाट लेवल द पर्सन इज एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो ये थ्योरी उन लोगों के लिए भी काफ़ी कारगर है कि अगर दे आर लुकिंग फॉर डिजाइनिंग एनी स्पेस, एनी इंटीरियर्स फॉर ए पर्सन हु इज mental ability or remembering ability is getting low, or the person is not able to remember much things, yeah, that person is forgetting, right? तो उसको वापस लाने के लिए भी कैसे, हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट। तो दिस थ्योरी आल्सो टेल्स दैट ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी जस्ट ऐसी है, क्योंकि our ancestors वर वेरी मच कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये प्रॉब्लम आगे आएगा, कि जब आप मैथमेटिक्स पढ़ना बंद कर देंगे, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल द डिटेल्ड कंसेप्ट्स आप पढ़ना बंद कर देंगे, तो उसके बाद हाउ द थिंग्स कैन बी वर्कड आउट और बैक ट्रैक्ड, राइट? तो पहले तो कांटेक्ट आएगा द्रव्य से। कांटेक्ट जरूरी नहीं है टच हो, आप देख भी सकते हो, आप उसको सुन भी सकते हो, यू कैन हियर इट, यू कैन सी इट। कांटेक्ट विद द गुणास और क्वालिटीज थ्रू द थिंग्स संयुक्त समवाय इन विच दे इनहेर इन द समवाय इंसेपरेबल रिलेशनशिप। इन समवाय हमने पढ़ा था, इंसेपरेबल रिलेशन, जैसे जो आगे एक लाइट लगी है, लाइट का एक अपना इंसेपरेबल रिलेशनशिप है कि इट इज प्रोड्यूसिंग लाइट, and we are seeing the light because it is itself light, right? Contact with the gunas such as color, generic character of the universals of those quality, colorness, rupatva, in which there are gunas of samavaya relationship. तो इसमें समवाय रिलेशनशिप की किस कलर, अब जैसे मेरा जो स्किन टोन है, दैट इज आल्सो इन एडिशन टू द कलर दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस लाइट। लेकिन उसके बाद भी जो मेरा नेचुरल टोन है, सम विच इज इनहेरेंट इन मी, दैट इज दैट विल रिमेन सेम। आपको जो दिख रहा है वो दैट इज एन एडिशन टू द लाइट। अब अगर जैसे मैं लाइट बंद कर दूंगा तो आपको ये शेड अलग दिखेगा, ये दूसरी लाइट्स की वजह से। ये मैं लाइट ऑन कर ली है अब इस लाइट की वजह से, राइट? And this species of contact is called samyukta samaveta samavaya. For the eye is in contact with the thing, in the thing the color is in the samavaya relation, and the specific color there is a color universal or the generic character of color in samavaya relationship. अब इसमें संयुक्त समवेत समवाय, इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें इनहेरेंट हैं। अगर आप किसी भी डिजीज की बात करें जिसमें मेमोरी लॉस हो रहा है, तो उस केस में कुछ चीजें इनहेरेंट होती है, कुछ चीजें आप भूलते नहीं हो, कुछ चीजें यू आर सीइंग थिंग्स एज इनहेरेंट इन इट, राइट? तो हाउ यू आर परसीविंग दीज इनहेरेंट थिंग्स, हाउ कंफर्टेबल इन आर यू सीइंग दैट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट एल्जाइमर्स डिजीज, मैं नाम भूल रहा था बार बार, ठीक है? There is another kind of contact called samavaya, by which sounds are said to be perceived by the ear. The auditory sense is akasha, and the sound exists in akasha in the samavaya relation, and thus the auditory senses can perceive sound in a
peculiar kind of contact called samaveta samavaya. The generic character of the sound as the universal of sound shabdatva is perceived by the kind of contact known as samaveta samavaya. There is another kind of contact by which negation abhava is perceived, namely samyukta visheshana as qualifying contact. This is so called because the eye perceives only the empty space, which is qualified by the absence of an object, and through its negation. Thus, I see that there is no jug here on the ground. इसमें एक और चीज़ है कि जो भी हमारी आंखें हैं वो एम्प्टी स्पेसेस को परसीव ही करती है. आप इसे इमेजिन कीजिए कि अगर इमीडिएटली आपकी आंखों के सामने कुछ हो ऐसे, तो आप उसे क्लियर नहीं देख पाओगे. आप जब तक तब तक ही देख पाओगे जब तक उसके बीच में एक स्पेस रहेगा. सोचिए ये इसमें कितनी गूढ़ साइंस है जो हम अब तक नहीं समझ पाए हैं. तो पहली बात, इसे मैं थोड़ा सा और रिपीट करूंगा. There is another kind of contact called samavaya by which sound is said to be perceived by the air. तो कुछ भी साउंड है वो आकाश का कैरेक्टरिस्टिक है, हवा की घर्षण से होता है. तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आकाश. Exists in akasha in the samavaya relationship, यानी कि it is inherent in that, it can't be separated. Thus the auditory senses can perceive sound in a peculiar kind of contact called samaveta samavaya. तभी भी आप पानी में पहले तो आप बोल नहीं पाएंगे, अगर आप बोल भी देंगे किसी तरह कुछ लेके वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा until unless there is a wireless communication or something which converts those sound waves into electronic waves and then electronic waves to sound waves. So this is that. The generic characteristic of sound as the universal of sound shabdatva is perceived by the kind of contact known as samaveta samavaya. राइट जो जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का एज ए यूनिवर्सल ऑफ साउंड शब्दत्व इज परसीव्ड बाय द काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट नोन एज समवेत समवाय. राइट there is another kind of contact by which negation abhava is perceived, namely samyukta visheshana as qualifying contact. This is so called because the eye perceives only the empty space which is qualified by the absence of an object and through its negation. मैं एक स्क्रीन को थोड़ा दूर रख के आपसे लाइव पे बात कर पा रहा हूँ. राइट, स्पेस है तभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी ऐसे रख के तो बात नहीं कर सकता हूँ. राइट, तो इस केस में वो कंडीशंस बताइए. तो किसी ने तो पहले भी देखा होगा ना कि आंखों से हम कितना देख सकते हैं. अब क्योंकि आंखों के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है, दैट मीन्स इट इज सेड कि इट इज ओनली परसीविंग द नेगेटिव स्पेस ओनली. इट इज ओनली सेइंग कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है. मतलब इट इज ऑल्सो सेइंग कि ठीक है दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, ओके. बट अगर आप इस पूरी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तब आपको पता लगेगा ओके दिस इज ओनली परसीविंग द नेगेटिव स्पेस, जो स्पेस जिसमें कुछ भी नहीं है, ओनली आकाश है. राइट, thus I see that there is no jug here on the ground. My eye in this case is in touch with the ground, and the absence of jug is only a kind of quality of the ground which is perceived along with the perception of empty ground. It will thus be seen that Nyaya admits not only the substances and qualities but all kinds of relations real and existing, and is as being directly apprehended by perception. So far as there is directly presented. The most important thing about the Nyaya Vaisesika theory of perception is that the whole process beginning from the contact of the senses with the object to the distinct and clear perception of the thing, sometimes involving the appreciation of its usefulness or harmfulness, is regarded as the process of perception and its final result perception. The self, the mind, the senses, and the objects are the main factors by the particular kind of contact between which perceptual knowledge is produced.
all knowledge is indeed artha prakasha, revelation of objects, and it is called perception when the sense factors are the instruments of its production and the knowledge produced is of object with which the senses are in contact. इसको हम थोड़ा सा दोबारा रीड करते हैं. The most important thing about the Nyaya Vaisesika theory of perception is that the whole process beginning from the contact of sense with the object to the distinct and clear perception of the thing sometimes involves the appreciation of its usefulness or harmfulness is regarded as the process of perception and its result perception. The self, the mind, the senses, and the objects are the main factors by the particular kind of contact between which perception knowledge is produced. All knowledge is indeed artha prakasha, revelation of objects, and it is called perception when the sense factor are the instruments for its production and the knowledge produced is of the object which the senses are in contact. The contact of the senses with the object is not in any sense metaphorical but actual. Not only in the case of touch and taste as are the senses in contact with the object, but in the cases of sight, hearing and smell as well. इसमें ये बताया गया कि जब भी कोई चीज़ आप परसीव कर रहे हैं, पहले तो इनिशियल परसेप्शन ही होगा, उसके बाद आप पता लगा पाएंगे वेदर इट इज़ यूजफुल और हार्मफुलनेस उसकी क्या है, एंड हाउ यू परसीव कि उसका अर्थ प्रकाश है, मतलब रेवलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज कॉल्ड बाकी सेंस ऑब्जेक्ट से भी आप पता लगा पाएंगे. The contact of senses with the object is not in any sense metaphorical but actual. ये सारे जितने भी senses हैं, they are not metaphorical but actual. These are the senses, right? The senses according to the Nyaya Vaisesika are material, and we have seen that the system does not admit of any other kind of transcendental atindriya power shakti than that of actual vibratory movement which is within the purview of the sense cognition. The production of knowledge is thus no transcendental occurrence, but is one which is similar to the effect produced by the conglomeration and movements of physical causes. When I perceive an orange, my visual and the tactual senses is in touch, not only in the specific color or hardness, but also with the universal association with them in a relation of inherence and also with the object itself, of which the color etc. are predicted. The result of this sense contact at the first stage is called alokana jnana, sense cognition, and as a result of that, there is roused the memory of its previous taste and the sense of pleasurable character. Sukha sadhana samriti, and as a result of that I perceive the orange before me at to have a certain pleasure giving character, right? जब हम ऑरेंज को देखते हैं, ऑरेंज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इट इज़ उसका ऑरेंज कलर है, कुछ दाने हम हाथ लगा के देख सकते हैं, एंड कई बार जैसे आप घर से निकले हैं संतरा देखने, तो फ्रेश है कि नहीं है वो आप छू के बता सकते हैं. तो वो आपकी इनहेरेंट मेमोरी में है, हाउ टू एक्चुअली आइडेंटिफाई वेदर द फ्रूट इज फ्रेश और रॉटन, राइट? The result of the sense contact first stage is called अलोकन ज्ञान, sense cognition. के पहला जो contact हुआ, चाहे आपने आंख बंद करके देखा, छुआ, या फिर आंख खोल के जस्ट देखा, तो वो पहला जो है कि सेंस कॉग्निशन, दैट है अलोकन ज्ञान. आप कई बार जब देखते हो एज अ फर्स्ट इंस्टेंस, तो कई बार आप दो चीज़ों को कंफ्यूज भी तो कर सकते हो कि अगर ये ऑरेंज है, ऑरेंज का कलर कुछ डिफरेंट है, सो यू माइट कंफ्यूज इट विद अदर थिंग. बट वंस यू कम क्लोजर and closer, and once you start touching and start feeling that fruit, then you get to know the entire characteristics of that. And as a result of that, there is roused the memory of the previous taste and sense of pleasurable characteristic, sukh sadhana smriti. यानी कि जब आप उसको छूते हो एंड व्हेन यू टच इट एंड चेक इट,
तो फिर आपको अपना पुरानी स्मृति याद आती कि ऐसा जब संतरा आपने पहले लिया था तो तब उसका क्या टेस्ट था, हाउ वाज द टेस्ट ऑफ दैट, राइट? And as a result of that, I perceive the orange before me to have a certain pleasure giving character. It is urged that the appreciation of the orange as a pleasurable object should be regarded as direct result of perception through the action of memory operating in the concomitance cause sahakari. It is urged that this appreciation of orange as a pleasurable object should be regarded as direct result of perception through the action of memory. यानी कि मेमोरी ने आपको पुराने जो ख्याल थे, पुराना जो एक्सपीरियंस था वो याद दिलाया. ऑपरेटिंग एज अ कॉन्कोमिटेंट कॉज, सहकारी, यानी कि वो एक एडिशनल कॉज है सहकारी, जिसके बेसिस पे आपको पता लग रहा है अच्छा ये फल खराब होगा, सड़ा हुआ होगा या जूसी होगा. I perceive the orange with the eye and understand the pleasure it will give by the mind, and thereupon understand by the mind that it is a pleasurable object. So, though this perception results immediately by the operation of the mind, yet since it could only happen in association with sense contact, it must be considered as a subsidiary effect of sense contact and hence regard as visual perception. Whatever may be the successive intermediary process, if the knowledge is a result of sense contact and if it pertains to the object with which the sense is in contact, we should regard it as a result of perceptual process. कुछ भी हमें इन दी एंड पता लगता है कि संतरा कैसा है, खराब है, अच्छा है, या फिर आप धोखा खा गए, तो इन दी एंड इस चीज को एज अ परसेप्चुअल रिजल्ट ही माना जाएगा, कि परसेप्शन ही माना जाएगा, राइट? परसेप्चुअल प्रोसेस. Sense contact with the object is thus the primary and indispensable condition of all perceptions. And not only can the senses be in contact with the objects, their qualities and the universals associated with them, but also with negation. A perception is erroneous when it presents an object in a character which it does not possess. Atashmishtaditi, and right knowledge prama is that which presents an object with a character which it really has. Tadvati tat prakarna kanubhava. In all cases of perceptual illusion, the sense is in real contact with the real right object, but it is only on account of the presence of certain other conditions that it is associated with wrong characteristics or misapprehended as a different object. इसमें एरोनियस का बताया गया कि जब आप इनिशियली कोई भी चीज़ परसीव कर रहे हो तो वो एरोनियस भी हो सकती है. परसेप्शन इज एरोनियस when it presents an object in a character which it does not possess. Atasmi mimstaditi, and right knowledge prama. यानी कि अगर जैसे रोप एंड स्नेक का एग्जाम्पल बहुत लोग देते हैं, राइट? हमने भी पिछली सीरीज में दिया हुआ है, राइट? In all cases of perception, illusion, perceptual illusion, the sense is in real contact with the right object, but it is only on account of presence of certain other conditions that it is associated with wrong characteristics or misapprehended as a different object. हम चीज़ तो सही छू रहे हैं, फिर चीज़ को सही देख रहे हैं. इसमें छूने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाय फिजिकल टच. It is also means कि आप you are sensing it with your eyes or ears as well, right? Thus, when sun's rays are perceived in a desert and misapprehended as a stream, or at the first determinate stage, the visual sense is in real contact with the rays, and thus far there is no illusion so far as contact with the real object is concerned. But at the second determinate stage, it is owing to the similarity of certain of its characteristics with those of a stream, this that is called misapprehended as stream. ये हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि मिस एप्रीहेंशन कैसे होता है. वो तो आपने साइंटिफिक देखा कि लाइट रेज ऐसे जाती हैं एंड आपको लगता है, लेकिन वो लगता कैसे है, ये इसकी थ्योरी इसमें दी गई है कि आपने
रेस तो देखी, बट उस रेस का आकार ऐसा था जिससे आपको एक स्ट्रीम या फिर एक ओएसिस का एग्जाम्पल इसमें मिलता है, राइट? Jayanta observes that on account of the presence of the defect of the organs or the rousing of the memory of similar objects, the object with which the senses is in contact hides its own characteristics and appears with characteristics of other objects, and this is what is meant by illusion. In the case of mental delusions, however, there is no sense contact with any object, and is arousing of irrelevant memories is sufficient to produce illusory notions. This doctrine of illusion is known as Vikarit Khyati or Anyatha Khyati. In the case of mental delusions, however, there is no sense contact with any object, and the rousing of irrelevant memories is sufficient to produce illusionary notions. इसे अन्यथा ख्याति बोलते हैं कि आपने जस्ट कुछ देखा एंड आपके अपने मन के ख्याल से वो आपको कुछ चीज़ लग रही है, जैसे इन द सेंस आप जब बादल देख रहे हो तो बादल में आपको कोई शेप्स दिख रही हैं, कोई इमेजेस दिख रही, दैट इज अन्यथा ख्याति और विपरीत ख्याति। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर में आता है। व्हाट एग्जिस्टेड इन द माइंड अपीयर्ड एज द ऑब्जेक्ट बिफोर अस, हृदय परिस्फुरोतार्थस्य बाहिरावाभाषणम। Later Visheshika, as interpreted by Prashastapada and Sridhara, is in full agreement with Nyaya and this doctrine of illusion. Brahma or Visheshika calls it Vipraya, that the subject of illusion is always at the is always the right thing with which the sense is in contact, and that the illusion consists in the imposition of wrong characteristics. Later Vaisesika, as interpreted by Prashtapada and Sridhara, is in full agreement with Nyaya in this doctrine of illusion. Brahma Vaisheshika calls it Nirvipraya. Vaisheshika इसी चीज को निर्विप्राय बोलते हैं, that the object of illusion is always the right thing with the same sense is in contact with the and that the illusion consists in the imposition of wrong characteristics. I have pointed out above that Nyaya divided perception into two classes as Nirvikalpa, indeterminate, and Savikalpa, determinate, according as it is an earlier or the later stage. Vachaspati says that at the first stage, perception reveals an object as a particular. The perception of an orange at this avikalpa or nirvikalpa stage gives us indeed all its color, form, and also the universal or orangeness associated with it. But it does not reveal it in a subject predicate relation, as when I say this is an orange. The avikalpa stage thus reveals the universal association with the particular. But as there is no association of name at this stage, the universal and the particular are taken in one sweep and not as term of relation as a subject and predicate or substance and attribute. He thinks that such a stage, when the object is only seen but not associated with the name or the object predicate relation, can be distinguished in perception not only in the case of infants or dumb person that do not know the names of things, but also in the case of an ordinary persons, for the association of names and relations could be distinguished as occurring at the succeeding stage. Sridhara is explaining the Vaisheshika view, seems to be largely in agreement with the above view of Vachaspati. The Sridhara says that in the Nirvikalpa stage, not only the universals were perceived, but the differences are as well. But as at this stage there is no memory of other things, there is no manifest differentiation and unification.
such as can only result by comparison. By the differences and the universals as they are in the things are perceived, only they are not consciously ordered as different from this or similar to this, which can only take place at the सर्विकल्प stage. इसमें ऑर्डर की बात की गई है कि जब आप कोई चीज़ देखते हो तो आप ऑर्डर वाइज उस चीज़ को देखते हो कि ओके ये आगे फ़ोन है, फ़ोन का क्या कलर है, फ़ोन की क्या, फिर उसके बाद आपको मेमोरी याद आएगी, अच्छा ये इसका ये मॉडल है, फिर उसके बाद याद आएगा अच्छा ये इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है, फिर उसके बाद ये भी याद आएगा कि व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एंटायर थिंग, राइट. तो occurs in the succeeding stage, ये succeeding stage पे होता है. Sridhara, in explaining the Vaisesika view, seems to be largely in agreement with the above view of Vachaspati. The Sridhara says that in the Nirvikalpa stage, only Nirvikalpa stage, not only the universals were perceived, but the differences as well. But as at this stage there is no memory of other things, there is no manifest differentiation and unification, such as a case only result by comparison. But the differences and the universals as they are in the thing are perceived, only they are not consciously ordered as different from this or similar to this, which can only take place at the cervical stage. यानी कि आप किसी चीज में सिमिलैरिटी सिर्फ सविकल्प स्टेज में ही पता लगा सकते हैं, राइट. Vachaspati did not bring in the question of comparison with others, but had only spoken of the determinate notion of the things in definite subject-predicate relation in association with names. The later Nyaya writers, however, following Gangesha, hold an altogether different opinion on the object. Nirvikalpa knowledge means the knowledge of mere prediction, without any association with the subject or the thing to which the predicate refers. But such a knowledge is never testified by experience. The Nirvikalpa stage is thus a logical stage at the development of Nirvikalpa stage is thus a logical stage in the development of perceptual cognition and not a psychological stage. निर्विकल्प स्टेज इज द लॉजिकल स्टेज जिसमें आप साइकोलॉजी नहीं निकाल रहे हो, आप उसमें बस ये बता रहे हो कि अच्छा ये साउंड है, किसका हो सकता है, इंसान का हो सकता है, तो इंसान का होगा, राइट. With the Nirvikalpan, knowledge means the knowledge of mere prediction without any association, but the subject or the thing to which the predicate refers. But such a knowledge is never testified by experience. The Nirvikalpa stage is thus a logical stage, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से नहीं टेस्टिफाई, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस से टेस्टिफाई कर रहे हो, दैट इज साइकोलॉजिकल स्टेज. क्या आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, आपका माइंड क्या कहता है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपका बिहेवियर क्या कहता है, राइट. They would not like to dispense with it, only they think that it is impossible to have the knowledge of the thing as qualified by the predicate or the quality without previously knowing the quality of the predicate. So before any determinate knowledge such as I see a cow, this is a cow can arise, it must be preceded by an indeterminate state presenting only the indeterminate, unrelated, predicative quality or as nirvikalpa, unconnected with universality or any other relationship. But this stage is never psychologically experienced, and it is only a logical necessity arising out of their synthetic conception of the proposition as being the relation of a predicate with subject. यानी कि अगर हम उस लॉजिकल नॉलेज की बात करें तो वो कभी आता नहीं, हमें सिर्फ साइकोलॉजिकल नॉलेज का ही ज्ञान रहता है. लेकिन अगर आप इन डीप जाएंगे तो पहले आप उस चीज़ को एज ए शेप देखें कि कुछ तो शेप है, फिर उसके बाद आप देखें अच्छा ये फिर एक एनिमल है,
एनिमल के बाद जब आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आपके दिमाग में फिर वो याद आएगा आपकी साइकोलॉजी, अच्छा ये बुल है, उसके दो हॉर्न्स हैं, एंड काउ है, ऑक्स है, क्या है, राइट। अगर आपको इन सब के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप सब चीज़ों को एक ही नहीं रेफर करने लग जाएंगे। आप इन सब ऑक्स में, बुल में, काउ में, इन सब में अगर डिफरेंस पता होगा देन डेफिनेटली यू विल हैव अ डिफरेंस, राइट। Thus, Vishwanatha says in his Siddhanta Muktavali, the cognition which does not involve relationing cannot be perceptual, for the perception is of the form I know the jug. Here, the jug is related to the self. The knower, the jug, again is related to the knowledge, and the definite content of the jugness is related to the jug. It is this content which forms the predicative quality Vaisheshanata Vachadaka of the predicate jug which is related to knowledge. We cannot therefore have the knowledge of the jug without having the knowledge of the predicate quality, the content. But in order that the knowledge of the jug could be rendered possible, there must be a stage at which the universal and the pure predication should be known, and this is the nirvikalpa stage, the admission of which, though not testified by experience, is after all logically indispensably necessary. In this proposition, it is a cow. The cow is an universal, and this must be intuited directly before it could be related to particular with which it is associated. But both the old and the new school of Nyaya and Vaisheshika admitted the validity of the Savikalpa perception with the which the Buddhists denied. Things are not of the nature of momentary particulars, but they are endowed with classical characters or universals, and thus our knowledge of universals are revealed by the perception of objects, is not erroneous, and is directly produced by objects. The Buddhists hold that error of a savikalpa perception consists of attribute of jati, universal, guna, quality, kriya, action, name, nama, and dravya, substance to things. इन चीज़ों को आप इस चीज़ से भी देख सकते हैं, जब अल्जाइमर डिजीज़ होता है तो आपकी मेमोरी एक लेवल तक नीचे चली जाती है। आप सिर्फ उस लेवल को सामान्य के रूप में देख सकते हैं, या फिर बेसिक शेप्स के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वो शेप है क्या, what that shape is denoting, which language is it. Many times you forget the language, but you also but you identify the basic signs like arrows and all, क्योंकि वो आप रोजमर्रा की लाइफ में यूज भी करते हो और देखते भी हो, राइट। The universals and that of which the universal is predicated are not different, but are the same identical entity. Thus, the predication of an universe in the Savikalpa perception involves the false creation of a difference where there was none. So also the quality is not different from the substance, and no, and to speak of a thing as qualified is thus an error similar to the former. The same remark applies to action, for motion is not something different from that which moves. But name is completely different from the thing, and yet the name and the thing are identified. And again, the percept man with stick is regarded as if it was a single thing or substance, though man and stick are although different, and there is no unity between them. Now, as regards the first three objections, it is a question of difference of Nyaya ontological position and that of the Buddhists. For we know that Nyaya and Vaisheshika believe jati, guna, and kriya to be different from the substance. Therefore, the predicating of them or substance as different categories related to at the determinate stage of perception cannot be regarded as erroneous. इसमें ये बोला गया है
कि जो बुद्धिस्ट फिलोसफी कहते हैं कि जाति यूनिवर्सल, क्वालिटी गुणा, एंड क्रिया एंड नेम एंड द्रव्य, ऑल दीज आर इनहेरेंट। तो इसमें जैसे आपने निर्विकल्प में आपने जस्ट किसी चीज़ को सुना, सुनने के बाद आपने उसे देखा तो इमीडिएटली आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ भी याद आएंगी, उसके एक्शंस भी याद आएंगे, नाम भी याद आएगा, किस मटेरियल ने सब्सटेंस से बना है वो भी याद आएगा, राइट। तो वो सविकल्प सिद्धांता में आता है, सविकल्प परसेप्शन में आता है, जिसको इन्होंने इस चीज में किया, एंड दे आर एक्चुअली हैविंग अ वाद संवाद ऑफ दैट। तभी ये बोला गया कि जब ये डिटर्मिनेट स्टेज हो जाता है, द परसेप्शन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एरोनियस, कि जब व्हेन यू आर डिटर्मिनेट कि हाँ दिस इज द थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एरोनियस। As to the fourth objection, Vachaspati replies that the memory of the name memory of the name of the thing aroused by its sight cannot make the perceptual erroneous. The fact that memory operates cannot in any way vitiate perception. The fact that name is not associated until the second stage through the joint action of memory is easily explained, for the perception of memory was necessary in order to bring about the association. But so long as it is borne in mind that the name is not identical with the thing, but is only associated with it as being the same as was previously acquired, there cannot be any objection to the association of name. But the Buddhists further object that there is no reason why one should identify a thing seen at the present moment as being that which has been seen, which was seen before, for the identity is never the object of visual perception. To this, Vachaspati says that though the help of memory or past impression sanskara, this can be considered as being directly the object of perception, for whatever may be the concomitant cause, when the main cause of sense contact is present, this perception of identity should be regarded as the effect of it. यानी कि वो बोल रहे हैं कि आपके पास्ट मेमोरी ही तो होगी जो आपके सामने आएगी, कि आप इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो एज अ फोन, एज अ लाइट, एज अ चार्जर, एज अ पावर बैंक, व्हाटसोएवर। अगर वो आपकी पास्ट मेमोरी नहीं देगी तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? टू दिस वाचस्पति सेड ठीक है, आप जो ये कह रहे हो दैट इज राइट, बट ये जो आइडेंटिटी है उसकी उसको आने के लिए भी तो एक इफेक्ट चाहिए होगा ना, जो हमने पहले बताया था कि सहकारी है, that your past memory is सहकारी or the helping hand to identify that. But the Buddhists still emphasize the point that an object of past experience refers to the past time and place and is not experienced now and cannot therefore be identified with an object which is experienced at the present moment. तो बुद्धिस्ट तब भी कहते हैं कि नहीं, जो पास्ट की चीज़ें वो पास्ट है, वो आज के ज़माने में नहीं ट्रू करती है। जैसे इन द सेंस कि आपने कोई फ्रूट लिया विच यू हैव अ मेमोरी 5 to 10 years अहेड बिफोर, जब 5 से 10 साल पहले की आपने कोई मेमोरी है आपकी, इन विच यू आर हैविंग परसेप्शन, इफ यू आर हैविंग अ सर्टेन थॉट प्रोसेस, तो इन दैट केस आप आज के एग्जाम्पल से कैसे रिलेट कर सकते हो, राइट? तो इस केस में आप देख पाओगे, राइट? इट इज इन द सेंस के पढ़ाई का स्तर नीचे जाता जा रहा है, तो जिस तरीके की पढ़ाई पहले होती थी वो अब नहीं हो रही है, तो व्हाई दैट थिंग इज हैपनिंग, दैट इज अ फ्रूटफुल थॉट. It is easy to see that early Nyaya Vaisesika could not dismiss the Savikalpa perception as well as invalid, for it was the same as the Nirvikalpa and differed from it only in this, that the name was associated with the thing of perception at this stage. As it admits a gradual development of perception as the progressive effect of causal operation continued through the contact of mind with the self and other and objects under the influence of various intellectual and physical concomitant causes, it does not, like Vedanta, require that right perception should only give knowledge which was not previously acquired. The variation as well as production of knowledge in the soul depends upon the variety of causal collocations. Mind, according to Nyaya,
Mind, according to Nyaya, is regarded as separate sense and can come in contact with pleasure, pain, desire, antipathy, and will. The later Nyaya writers speak of three other kinds of contact of transcendental nature called Samanya Lakshana, Jnana Lakshana, and Yogaja, miraculous. The contact Samanya Lakshana is that by virtue of which you are coming in contact with the particulars, we are transcendentally alaukic in contact with all particulars in a general way, of which the corresponding universal may be predicted. Thus, when I see smoke and through it my senses is in contact with universal association with smoke, by visual sense is in transcendental contact with all smoke in general. Gyan Lakshana contact is that by virtue of which we can associate the perception and other senses when perceiving by any one sense. Thus, when we are looking at a piece of sandalwood, or visual sense is in touch with the color only, but still we perceive it to be a fragment without any direct contact of the object other than with the organs of smell. Thus when I see smoke, ये हम बात कर रहे हैं सामान्य लक्षणा, जिसमें हम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ट्रांसेंडेंटली अलौकिक चीज से आते हैं, के कॉन्टैक्ट में आते हैं. Thus when I see smoke and through it my senses is in contact with universal associated with smoke, by visual sense is in transcendental contact with all smoke in general. ज्ञान लक्षणा कॉन्टैक्ट इज दैट. अब इसमें मैं जब भी स्मोक को देखता हूँ तो इन जनरल मैं स्मोक का एग्जांपल देता हूँ कि इन जनरल जब स्मोक उठती तो क्यों उठती है, क्या रीज़न है, राइट. लेकिन जब हम ज्ञान लक्षणा की बात करते हैं, कॉन्टैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर एसोसिएटेड विद परसेप्शन ऑफ अदर सेंसेस when perceiving by any one sense. Thus when we are looking at a piece of sandalwood, our visual sense is in touch with its color only, but still we perceive it to be fragrant without any direct contact with the object, with the organ or smell. The sort of transcendental contact, alokik sannikarsha, by virtue of which this is rendered possible, is called jnana lakshana. But the knowledge acquired by these two contacts is not counted as perception. सिद्धांत मुक्तावली में लिखा हुआ है, we must remember that Gangesha discarded the definition of perception as given by Nyaya Sutra, which we have discussed above, and held that perception should be defined as that cognition which has a special class character of direct apprehension. He thinks that the old definition of perception as the cognition generated by sense contact involves a vicious circle. Sense contact is still regarded by him as the cause of perception, but it should not be included in the definition. He agrees to the six kind of contact described first by Udyotkara as mentioned above. Pleasure and pain, sukha dukha, are held by Nyaya to be different from knowledge jnana. For knowledge interprets, conceives, or illumines things, but sukha etc. are never found to appear as behaving in their character. On the other hand, we feel that we grasp them after having some knowledge. They cannot be self-revealing, for even knowledge is not so. If it were so, then that experience which generates sukha is one should have generated the same kind of feeling in others, or in other words, it should have manifested its true as sukha to all, and this does not happen, for the same thing which generates sukha in one might not do so in others. Moreover, even admitting for the argument's sake that it is knowledge itself that appears as pleasure and pain, it is evident that there must be some difference between the pleasure and painful experience that make them so different. And this difference is due to the fact of that knowledge is
in one case was associated with sukha and in another case with dukha. This shows that sukha and dukha are not themselves knowledge. Such is the course of thing that sukha and dukha are generated by the collocation of certain conditions and are manifested through or in association with other objects, either in direct perception or in memory. They are thus the qualities which are generated in the self as a result of causal operation. It should, however, be remembered that merit and demerit act as concomitant causes of their production. एक टाइप की, जैसे आप इस चीज़ को इस चीज़ से ले सकते हैं कि एक इंसान है, वो एक इंसान किसी एक को बहुत अच्छा लगेगा, वही इंसान किसी एक को बहुत गंदा लगेगा. जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक के लिए तो आंखों के तारे हैं, लेकिन किसी एक के लिए वो आंखों में बड़े अखरते हैं. वैसे ही सुख दुख इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉलेज. नॉलेज सेम रहेगा, लेकिन आप किस चीज़ों से उसे परसीव कर रहे हैं, क्या परसीव कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली गिवन हाउ यू आर परसीविंग and in the what conditions you are perceiving that, right? The yogins are believed to have the protection of the most distinct things beyond our senses. They can acquire this power by gradually increasing their powers of concentration and perceive the subtlest and the most distant objects directly by their mind. Even we ourselves may at some time have the notions of future events which come to be true. Example, sometimes I may have intuition that tomorrow my brother will come, and this may happen to be true. This is called pratibhana jnana, which is also to be regarded as pratyaksha directly by the mind. This is of course different from the other forms of perception called manas pratyaksha, by which memories of past perceptions by other senses are associated with the percept visualized at the present moment. Thus, we see a rose and perceive that it is fragrant. The fragrance is not perceived by the eye, but the manas receives it directly and associates the visual percept with it. According to Vedanta, this acquired percept is only a case of inference. The pratibha prataksha, however, is that which is with inference to the happening of a future event. When a cognition is produced, it is produced only as an object cognition. Example, this is a pot, but after this it is again related to the self by the mind. I know this pot. This is affected by the mind again coming in contact with the perception of the cognition which has already been generated in the soul. This second perception is called anuvya vasaya, and all practical works can proceed as a result of anuvya vasaya. यानी कि जब आप किसी चीज़ को परसीव कर लेते हैं, आपने एक चीज़ को देखा, पहले वो अननोन थी, अननोन थी के बाद आपने जस्ट उसको हल्का सा देखा कि या सुना कि ये चीज़ क्या है, इज इट अ ह्यूमन वॉइस, इज अ गधे की आवाज़ है, कुत्ते की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है. फिर उसके बाद अब जैसे इन द सेंस 3 बजे मेरी नींद आज खुल गई थी, एंड 3 बजे नींद खुलने का कारण ये था कि बाहर डॉग्स वो बार्किंग लाइक एनीथिंग. तो मुझे लगा एक बार जाके तो देखना चाहिए, ऐसे तो काम बनेगा नहीं. तो पहले मेरे को हल्की सी नींद खुली किसी के आवाज़ से. अब किसी की आवाज़ से के बाद ये टर्म आता है किसकी आवाज़, डॉग्स की आवाज़. तो डॉग्स की आवाज़ से जब नींद खुली तब मैंने अनुमान लगाया कि वो शायद यहीं आसपास होगा, तो मुझे उसे भगाना है जस्ट. तो मैंने जस्ट उस डॉग को जस्ट भगाने के लिए बाहर गया. फिर जब मैं, अब वो सिर्फ डॉग था, लेकिन डॉग के बाद फिर मैंने उसे देखा कि अच्छा ये तो काला कुत्ता है. काला कुत्ता देखने के बाद तब मुझे पता लगा ये तो वही कुत्ता है जो मुझे रोज सुबह देखता है. मैं उससे बोला भाई क्या हुआ, चलो आगे, अब क्यों इतनी सुबह सुबह जगा रहे हो. खैर वो जगाने का काम कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त पे. तो मैं कहा ठीक है, ये भी दिस इज ऑल्सो गुड, अगर ब्रह्म मुहूर्त पे जगाने का काम कर रहे हैं तो
एंड उसके बाद द सेकंड परसेप्शन के दिस इज द जग, जैसे बोल रहे हैं आई नो दिस स्पॉट, दैट इज व्हेन आई सेड आई नो दिस डॉग, ये डॉग रोज मुझे सुबह दिखता है, राइट। तो ये अनुव्यवास्य है। ऑल प्रैक्टिकल वर्क्स प्रोसीड एज अ रिजल्ट ऑफ अनुव्यवास्य, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल वर्क्स हैं कि आप किस चीज़ पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकली मैंने उसे देखा कि ये है, तो फिर हाउ हाउ डू आई कम्युनिकेट विद दैट, दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, हाउ आई डू। तो जो भी हम कोई चीज़ उसके बाद करते हैं ये अनुव्यवास्य के बाद होता है। This later Nyaya doctrine, Anuvyavasya, is a later Nyaya doctrine that the cognition of self is in association with cognition is produced at a later moment, must be contrasted with the Triputi Pratyaksha doctrine of Prabhakara, which holds that the object, the knower, and the knowledge are all given simultaneously in knowledge. Vyavasa, Vyavasa, Vyavasaya, determinate cognition, according to Gangesha, gives up only the cognition of object, but the cognition that I am aware of this object or cognition is a different functioning succeeding the former one is called Anu after Vyavasaya cognition. यानी कि आई नो दिस फॉर्मर वन बिकॉज आई हैव सीन दैट बिफोर, इसे अनुव्यवसाया, यानी कि अनु इज आफ्टर व्यवसाया इज अ कॉग्निशन, राइट। हम आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल से हम इन्फरेंस का स्टार्ट करेंगे। यस, इट्स अ बिग टॉपिक, न्याय वैशेषिका। तो न्याय वैशेषिका को ख़त्म होने में टाइम तो लगेगा। आई थिंक बाय दिस वीक विल फिनिश इट। फिलहाल हम इन्फरेंस को कल से स्टार्ट करेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। काफ़ी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स लग सकते हैं, बट ये जो टॉपिक है ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो इंटीरियर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जो जिनको कॉग्निशन पता होना चाहिए कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज थिंग्स, हाउ द अदर पीपल विल रिकॉग्नाइज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए काफ़ी यूजफुल रहती हैं, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। मैं मिलूँगा आपको कल लाइव दोबारा वही 7 से 8 सुबह। जय श्री राम।